Hello and welcome to SRIRAM's IAS. Today we will be discussing the recent most UPSC mains paper for the economy subject. UPSC का मेंस जो अभी कंक्लूड हुआ है उसमें इकोनॉमी से 6 क्वेश्चंस आए थे. On the basis of that, the classification which we have taken is we have separated agriculture from economics, and agriculture was already discussed by one of our faculties, and now we will be discussing the 6 more important questions which are more important for your upcoming mains, because if you understand what UPSC is actually asking, then only you can prepare better. So it's well said that if you do not understand PYQs, you're not actually preparing at all. Before understanding PYQs, you need to understand syllabus also, because syllabus clearly mentions these things which UPSC usually asks. There are limited themes for mains, and you need always to focus on those themes only. And if you focus on those themes like inclusive growth, which has been rightly mentioned in UPSC questions, and if you focus on those themes, then only you will be able to score better in mains. Now, without wasting any time, we'll just start the mains discussion. And before that, you can just do one thing. You can scan this QR code or this QR code. These two are for us and for you to get connected. This QR code will redirect you to a Google form, which will be for free one-on-one mentorship session. And this is for the Telegram channel, where you can find all our PDFs, daily MCQs, mains questions. And the surprising fact is that on this Telegram channel, there were multiple questions which were posted on daily basis, and UPSC asked its questions, and those questions which UPSC asked were quite similar to this. Further, there is weekly digest which we publish, and you will be surprised to know that the Fiscal Health Index, the Human Development Index, and I can say that the question which was on semiconductors, all of those themes were already covered on this Telegram channel through daily mains questions. Therefore, it's pertinent for you to join these initiatives of SRIRAM's IAS. Hello and welcome, and let's start this discussion with full enthusiasm and with full practice, a good mindset for mains, a good mindset to start answer writing. Because before mains, I came up and I said to all of my students in my live sessions that whatever the result is of prelims, leave that aside. Mains is coming. Sit at your home, libraries, wherever you sit, write this exam. Write the answers by whatsoever means you can. Do not think about time limit, but yes, attempt the paper at all. Because if you attempt this paper once, it will really be beneficial for you. Now, let's start understanding the questions. The first question which UPSC asked was about a good question about Human Development Index. Human Development Index and Inequality Adjusted Human Development Index. Prior to this, you might have also seen that I covered a similar topic of this, which was inequality in India. Because recently, in the month of August only, it was the World Equality Report. I guess in the month of July. Yes, it was in the month of July that the World Inequality Report was released, and in that report it was said that India is now turning as 4th most equal country of the world. Now, that is one prospect of this, and another prospect of this question was that there were multiple discussions not only on the inequality basis, but discussions between Gini coefficient, Palma ratio and quintile ratio while we discuss inequality and how to measure inequality. In that scenario, we all have been discussing this. Human Development Index was once asked in prelims also. So that also sets the paradigm that if UPSC is asking themes in prelims or mains, those themes are important for both the exams. That is why it is said that if you do not prepare for mains, you are not preparing for at all for the exam. Now, once we start understanding this question, it says the question is very much direct in its nature. Question का simple अगर आप demand देखें तो it says that distinguish, that you need to differentiate between the two. One is Human Development Index, another is Inequality Adjusted Human Development Index.
दोनों में डिफरेंस क्या है? तो समझना वही है कि ये जो टॉपिक आया है ये इसलिए आया है बिकॉज न्यूज़ में था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की जब आई तो इसने इंडिया को कहाँ प्लेस किया? 130th रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 इंडिया वॉज रैंक्ड 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट हु इज द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीजेस दिस रिपोर्ट। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स and inequality adjusted human development index with a special reference to India, that what is the perspective and what are the differences. Remember this, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो सबसे बड़ी गलती होगी मेंस में, वो गलती क्या होगी? that they will first write about, students will do what? They will first write about, they will introduce the question. And how will they introduce the question? They will introduce the question by defining human development index, or they will start the question with this, that human development index is the rank of India is this and this and that. It was released by UNDP. It is released for this parameters. It actually is a parameter of development and not of growth. They will start this question with this. But the point here is, the clue in this question is that you need to distinguish this with the special reference to India. Understood? That is, in every distinction which you make between the two, there should be a distinction clear, and that distinction should clearly highlight that what are the impacts of and what is the score on HDI parameters and what is the score on IHDI parameters. If you understand that demand, then only comes the second part of this question. Second part is, why is this a better indicator of inclusive growth? Again, the same theme which UPSC has always repeated, that is inclusive growth. Inclusive growth के ऊपर ही क्वेश्चन आता है हमेशा, और आया भी है inclusive growth के ऊपर ही क्वेश्चन। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। We will start the introduction with, बहुत सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका। कैसे लिखेंगे? Again, the index of human development index, why is it released? In order to calculate and quantify the qualitative aspects of development. And why was this index developed at all? Because post 1990s, it was basically the Dudley Seer, it was Amartya Sen, it was Mehboobul Haq, who were the main economists who criticized. They provided a critique. They provided a critique to that time, which was at that time discussed the parameters of growth and development, which was GDP. These economists provided that the parameters which we are using as a GDP or GNP, in 1990s they provided a critique of these parameters and said that we need more holistic parameters to measure what? Development. So that should be the introduction, that why and how did these parameters came up, इनको बनाया ही क्यों गया और कैसे बनाया गया. Now, once we understand the introduction of this question, we will go to the body of this question. The body of this question will be in two parts. One is the distinction, that we will distinguish between the two, and the other part will be what? That how is IHDI a better parameter? ठीक है, दोनों चीजों को अलग अलग हमें लिखना होगा. Why? Because अगर आप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्टिंग्विश. तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? We will start by human development index and inequality adjusted human development index. अब दोनों को लिखेंगे. दोनों के पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स दोनों के सेम है. What are the three parameters? Health, knowledge, standard of living,
ठीक है, यही 3 पैरामीटर्स है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचडीआई एंड आईएचडीआई? दैट दिस एचडीआई इज एक्चुअली डिस्काउंटेड, हाँ, डिस्काउंटेड विद इनइक्वालिटी. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, दैट ये HDI और IHDI के बीच का मेन डिफरेंस है. एंड इसीलिए HDI पे इंडिया का जो स्कोर था दैट वाज 0.6785, 0.685. वहीं पे अगर आप इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया स्कोर वाज अराउंड 0.475. 0.475. Now that differentiation of score between IHDI and HDI has to be highlighted, and this has amounted to around 30% of loss on developmental parameters only because of inequality. समझ में आ गया कि inequality की वजह से ये 30% का लॉस हुआ है. That is the first point which we will be mentioning in our body. That is the first dimension and definition. Now, once we talk about the health indicator of it, life expectancy index की बात करते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में अगर इंडिया का स्कोर देखा जाए तो दैट वाज 67.2. बट व्हेन वी एनकाउंटर दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज 67.2 years, व्हेन वी डिस्काउंट इट विद इनइक्वालिटी, जब इसका इनइक्वालिटी पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे तो देयर विल बी लोअर रेशियो, lower score in terms of life expectancy. Why? Because there is stark inequality in health which contributes to overall loss, and there are disparities in terms of health. Education की बात करें और knowledge की बात करें तो India's mean years of schooling and expected years of schooling दोनों में डिफरेंस था. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वाज 6.7 years एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वाज 11.7 years. इट वाज 11.9 years, सॉरी. एंड दोनों को अगर आप इनइक्वालिटी को फैक्टर इन करेंगे तो देयर वाज अगेन अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. ठीक है, क्लियर? particularly in the rural areas, ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक. एंड दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत था. नाउ वंस वी अंडरस्टैंड दिस, लाइफ और एजुकेशन की बात हो गई. उसके बाद द थर्ड पैरामीटर दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंडियाज GNI दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, gross national income stood at around 6,590 dollars per capita income, अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल इनकम की. बट वहीं पे अगर आप इसको इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट करेंगे तो देन इट विल क्रिएट अ स्टार्क डिफरेंस, एंड इंडिया स्कोर्ड ओनली 35.7 points on Gini coefficient, which is basically the parameter of inequality. Understood yahan tak? So these are stark differences. Now how will this help us in ensuring and in achieving the inclusive growth? इसकी वजह से inclusive growth कैसे होगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. So IHDI, how will IHDI be a better indicator of growth? How is IHDI a better indicator of growth? Because सबसे पहला, it will provide us the real picture of inequality.
It will provide us the real picture of inequality. How? Because this index is developed on the basis of Atkinson method. Now, who was this Atkinson? Atkinson method actually is used to measure what? Inequality. How does this Atkinson method measure inequality? It basically takes the parameters of income, mean income, the population, and the inequality parameters. ठीक है, अब इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद ही बनता है IHDI. दैट इज वाई इफ वी कैप्चर इनइक्वालिटी प्रॉपरली, देन ओनली वी विल बी डूइंग व्हाट? वी कैन टारगेट पॉलिसी. देयर विल बी टारगेटेड पॉलिसी अप्रोच which will eventually be motivated to include the कौन से? downtrodden and marginalized sections in this will include the marginalized sections in developmental net. ठीक है, क्लियर यहां तक? अंडरस्टूड? क्लियर? फर्दर you also need to remember that education years, mean years of education can also be increased because there is 20% gender gap in the secondary education in northeastern states, and if you understand that there is a particular area जहां पे gap है, जहां पे problems है, तो you will go do what? You will accordingly that in that area you will understand that what are the major reasons for that, and you will implement policies according to that. Further, you also need to understand that, for example, in Kerala there is 97% literacy, but in Bihar there is only 70% literacy. So you need to take appropriate measures for that, and that is how this indicator can be a better indicator for inclusive growth. Understood? This also can help us in targeting schemes for health. कैसे? हेल्थ के स्कीम्स कैसे टारगेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर वी आर टारगेटिंग व्हाट? वी आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट 500 million people are being provided this health insurance, but actual mein if you see IHDI, when you compare the life expectancy of those who are downtrodden, who live in slums, who live in those areas which are less sanitized, which are congested areas where there is no sanitation, the rural areas, there you need to take efficient measures. तभी जाके आप वहां पे PHC खोलोगे, तभी जाके आप वहां पे स्वास्थ्य मंदिर खोलोगे. ठीक है, दैट इज व्हाट दिस IHDI will take care of, and that is how it will be a better indicator of inclusive growth. Sustainable development goals also talk about this. SDGs talk about what? The reducing of inequalities. So in order to achieve SDGs by 2030, we need a proper approach for that. SDG 10 clearly mentions that we need to take measures to reduce inequalities. अगर इसको अचीव करना है तो हमें पहले इनइक्वालिटी को पता करना पड़ेगा कि कितनी है. अंडरस्टूड यहां तक? प्लस लिमिटेशंस ऑफ दिस इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी मेंशन्ड, बट दे वर नॉट आस्क्ड. यस, व्हेन दे से दैट इट इज बेटर, ठीक है, IHDI इज बेटर, द कीवर्ड विच वाज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, the keyword which was mentioned in question was better. That why is it a better indicator? अब जब ये वाला कीवर्ड आ गया हमारे पास, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी होगी दैट यू ऑल्सो से दैट हाउ मच बेटर इज इट. ठीक है, अगर ये बोल रहा है बेटर है, यू शुड ऑल्सो से दैट हाउ मच बेटर इज इट. दैट इज वाई यू कैन मेंशन लिमिटेशंस ऑल्सो. ठीक है, लिमिटेशंस मेंशन करनी है तो लिमिटेशंस को मेंशन कैसे कर सकते हैं? दैट इट इज ह्यूजली डेटा डिपेंडेंट.
अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा डेटा पे रिडंडेंट होना पड़ेगा, डेटा पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड डेटा यूजुअली इज नॉट कोलेटेड, रादर वी जस्ट एक्सट्रापोलेट द डेटा. इट इज बेस्ड ऑन सर्वेज विच आर डन in some smaller sample size. The surveys which use smaller sample size are actually used and then extrapolated. That is one thing. Complexity is there in measuring the actual development. ठीक है. Plus narrow dimensions can be taken. For example, it can only focus on education and income inequalities. Rather, it can leave behind social inclusion, access to public participation, access to public places. These things can be left behind by this indicator because it's not talking about those per se, those things of public participation, of access to public places, access to open gyms वगैरह. ठीक है. Plus you will also see that there is caste factor involved, and there are multiple incidents which you might have seen in the newspapers, and those incidents are never reported to the authorities, and neither are they highlighted in such surveys. That is one more limitation for India, because we cannot rely on these indicators heavily. Rather, we should use it pragmatically. Therefore, in the last, what we will do is we will again conclude the question. We will again conclude this answer on what? Amartya Sen's capacity approach or capacity building approach. And what does this approach say us? बहुत सिंपल सा चीज है, that we need to help people, we need to build the capacity in the people so that they earn for their own welfare, so that they develop themselves. So that is the real human development. Understood यहाँ तक? Clear? Last में we can say that inequality is not just about the distribution of income, but yes, it is actually unequal access to the opportunities, and that is what has to be addressed. Done? With this, let's move to the next question. And हाँ, for you last में it is simple. अगर आप देखें यहाँ पे तो inequality adjusted human development index, there is a loss of around 5%, 6.3%. In terms of Iceland, Norway, which are the top most ranking countries on this, इनका भी loss because of inequality adjustment is there. Further, inequality in life expectancy also has a loss percentage. ठीक है. Similarly, if you go and read this index, you will find for India also there are such parameters of loss. ठीक है. And why so? Because inequality is actually a loss in the perspectives of development. With this, we conclude this question. That is, लास्ट में क्या लिखेंगे? अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच. एंड ये क्यों लिखना है? बिकॉज हमने ये स्टार्ट में भी इसी से किया था और लास्ट एंड भी इसी से करेंगे. दैट व्हाई वाज दिस डेवलप्ड एंड हाउ एक्चुअली डज दिस प्रोवाइड अस अ वे फॉरवर्ड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is about Indian economy and international relations. This question is basically about geoeconomics. ठीक है. And it says that what are the challenges? कि कौन से ऐसे चैलेंज है हमारे पास? What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? So first, there are some challenges to Indian economy, and now these challenges have been classified as that there are challenges posed from by whom? By protectionism. So there are protectionist challenges and there are bilateralism. Bilateralism के challenges है. Now, why are there challenges? Because world is moving from, because world economics is changing from what? Multilateralism to protectionism. So from multilateral we are moving to protectionist.
multilateral to we are moving to bilateral, and from free trade we are moving to protectionism. ठीक है, so the world is changing, the multipolar or multilateral world order is changing into bilateral world order, and free trade is changing into protectionism. Understood? यहां तक क्लियर? How can these challenges be met? So क्वेश्चन में हमें 3 डोमेन्स एंड 3 डायमेंशंस फुलफिल करने हैं. पहला हमें ये चैलेंजेस बताने हैं कि फ्री ट्रेड से प्रोटेक्शनिज्म में क्या चैलेंजेस है, मल्टीलेटरलिज्म से बाइलेटरलिज्म में चेंज होने से क्या चैलेंजेस होंगे, पर्टिकुलरली इंडिया को क्या चैलेंजेस होंगे. ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, वी ऑल्सो नीड टू सी दैट हाउ कैन वी मीट दीज चैलेंजेस, हम यहाँ पे कैसे करें काम अब, और इंडियन इकोनॉमी क्या कर सकती है, हम एज अ नेशन क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हम इन चैलेंजेस से बचे, हमारी इकोनॉमी इन चैलेंजेस से बचे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज अगेन अ सिंपल थिंग टू इंट्रोड्यूस. क्या करेंगे, सी फ्री ट्रेड, ठीक है, और प्रोटेक्शनिज्म. If the question itself is telling us two things, that there was free trade and now there is protectionism, there was multilateralism and now there is bilateralism. Now if we know these two things, it means something is changing in the world. What is actually changing? The international institutions which were established for free trade, which were established for multilateralism in trade, like WTO, World Trade Organization, which is actually a platform which provides us a shape, a platform for international trade. This WTO was in question once the protectionism, the tariff war started in Trump 1.0. और उस टाइम से लेके आज तक WTO के रिफॉर्म्स पे बहुत सारी बातें चली है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आया. एंड एक और सिनारियो था 2020 से ही लेके आज तक चल रहा था, दैट पोस्ट कोविड इट वाज द वर्ल्ड वाज एक्चुअली मूविंग, द MNCs वेर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, and they need a second place because China was being targeted by two things. One was COVID and another was the USA's tariffs. These two things actually challenged China. Now अगर हमें ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, these were posing challenge for China's now the place of China in international economics, in the geo-economics, that will China now sustain the production lines further after COVID. Now once we understand this, there were other issues which were basically highlighted only because there was a need for WTO reforms. What was that need? It was basically simple, that WTO at international level was totally hijacked by some of the countries, because USA challenged that it is China who is hijacking World Trade Organization, and US also blocked the dispute settlement body. There was no such appointment and the appointment kept pending for a long time in dispute settlement body, and this was the basic criteria and this was the basic plague, I can say the backdrop of this question, that why was this question asked, because this discussion was there for last 4 to 5 years and there has nothing changed in this question, and the situation of this world today is also same. World is again going into tariff wars, and there is again protectionism in the world. There is again the I can say the economic relations of the nations are changing. India, which was highly inclined towards US at one point of time, where we signed all the agreements, all the 4 agreements with USA, and again UPSC asked a question on that also at that time. Further, हमने ये भी देखा that now India is changing and India is now interacting and engaging with Russia, China and Japan, which once were earlier the enemies or axis or allies. Now this change is to be highlighted, and this change
usually we read in international relations. These changes we read in international relations. Geoeconomics is basically usually taken in international relations. But again, UPSC surprises the students. Artificial intelligence, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन GS1 में आया था. ये जियो इकोनॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन GS1 में आया. वहीं पे ये वाला क्वेश्चन जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? इकोनॉमी में आ गया. तो इन सरप्राइजेस के लिए याद रखना है कि हमें इन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना है. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हाउ शुड वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड हाउ शुड वी इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में सिंपल, देयर विल बी हाई दैट द सप्लाई चेन सिक्योरिटाइजेशन और वी कैन से द चेंजिंग world order, the changing world order or the changing geo-economics of the world. There were rising tariffs. We should not write this question ka answer in past. Rather, we should come to present and then write this answer. Tariffs and weakening of multilateral institutions. What are these multilateral institutions? Like World Trade Organization. Once we see this, once we set this playground for us to start, this has reshaped the trade of the world. And this was recently highlighted by United Nations UNCTAD. This organization highlighted in 2023 that there were more than 3,000 trade restrictions which were imposed in world, and this was projected that WTO projected that there will be the world trade in 2024. World trade in 2024 will be around 2.36%, 2.6% only will be impacted. World trade will be impacted, and the trade growth of world in 2024 will be now how much? 2.6% only. Further, now once we go back to question, we understand that we need to highlight the challenges of this. तो challenges को highlight करने के लिए हमें क्या करना होगा? We need to write the challenges which are associated with what? With the two things. One is challenges associated with the protectionism to Indian economy. चैलेंजेस में हमें दो चीजें लिखनी है. वन इज इंडियन इकोनॉमी के क्या चैलेंजेस हैं, किसको लेके? चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी. कौन से चैलेंजेस? पहला प्रोटेक्शनिज्म का चैलेंज. प्रोटेक्शनिज्म का चैलेंज क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात, क्या हो सकता है? बिकॉज नाउ वी विल फेस श्रिंकिंग ऑफ मार्केट्स, देयर विल बी लेस मार्केट्स अवेलेबल. Why? Because USA is imposing tariffs to which India was trading at around $45 billion of surplus. Now India will lose this market, and eventually India will be now having what? It might be now looking for new markets. Not only this, European Union has also introduced the carbon border adjustment mechanism. What is this mechanism talking about? It says that we will impose a carbon tax. So there are not only the economic restrictions, but there are also environmental challenges which are associated to geoeconomics, and we need to highlight them because they too have to fund their climate responsibilities. Understood? That is one thing. And remember one more thing, that this mechanism is a non-tariff. This is actually a non-tariff mechanism. ठीक है? Understood यहाँ तक?
इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगेन यूरोपियन यूनियन हैज प्लान्ड tariffs of around 20% to 35% on steel, aluminum and cement industry, which will again impact India. India which is highly dependent on imports. Protectionism की वजह से क्या होगा, the import dependence of India. India which is highly import dependent. Import dependence of India. This will also impact. Why? Because अगर हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है और हमारे ऊपर टैरिफ के रिस्ट्रिक्शंस लग गए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गए, प्रोटेक्शनिज्म लग गया, देन द कंट्री विल नॉट ट्रेड विद अस. वी हैव बीन टर्म्ड रिसेंटली एज ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी प्रोवाइड सो मच ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट्स. आर सप्लाई एक्सपोर्ट्स फॉर 2024 वेर मोर देन आर गुड्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ. द ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट्स वॉज मोर देन द ग्रोथ इन गुड्स एक्सपोर्ट्स. And that is one more thing which we might face as a challenge. There is problem with H1B visas also. ठीक है. Plus global protectionism has actually disrupted the supply chains. So there is disruption of supply chain. That is why India and Japan took together the initiative of सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. इसीलिए ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके. ये एक जगह से जो इंडस्ट्री लिंक्ड है, चाहे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एग्जांपल. रेयर अर्थ मैग्नेट्स में मोनोपोली है किसकी, चाइना की. चाइना की मोनोपोली एक्चुअल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स में है. रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं उसमें मोनोपोली है प्रोडक्शन की. बट वहीं पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहां पे अगर चाइना मोनोपोलाइज कर रहा है इस सेक्टर को तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसकी वजह से. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी शुड मेंशन. देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन H1B visas also which I mentioned earlier. So therefore there will be challenges with respect to protectionism. There will be similar challenges with respect to bilateralism also. Bilateralism से क्या चैलेंज होगा, सबसे पहला trade deficit with ASEAN countries will increase because even though we have signed FTAs, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद भी हमने उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लो यूटिलाइज किया है. Therefore, our utilization of free trade agreements stands at around 25%, which has created a huge trade deficit with ASEAN nations. उसके साथ साथ declining FDI is there. अगर हमारा FDI डिक्रीज हो रहा है, which was highlighted by World Investment Report 2024 also. It said that India का FDI has declined by 2% and global FDI has declined by 2%. और उसकी वजह से इंडिया का FDI जो इनफ्लो है विच मे डिक्रीज बाय 43%. ठीक है, तो ये भी डिक्रीज हुआ है किसकी वजह से, बायलेटरलिज्म की वजह से. नाउ हाउ टू व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू इंश्योर, व्हाट मेजर्स शुड वी डू, व्हाट मेजर्स शुड वी टेक. और मेजर्स सजेस्टेड, कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं सो दैट वी गेट आवर सेल्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज, फ्रॉम द प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरलिज्म, फ्रॉम द इल्स ऑफ दिस menace. Now how to do this? We need to enhance the trade diplomacy. ट्रेड डिप्लोमेसी को इंक्रीज करेंगे. कैसे इंक्रीज करेंगे ट्रेड डिप्लोमेसी को? By focusing on and setting a discourse for democratization of what? World institutions or trade institutions. Democratize करेंगे institutions को and we will ensure that there is non-polar world order. ठीक है, understood? So from minilaterals, or we can say from free trade agreement to protectionism, from free trade agreement to protectionism, there has been a growth of regional organizations, bilateral agreements. There has been a growth of minilaterals. ठीक है, there has been a growth of smaller organizations, regional organizations. ठीक है, and there has been a growth of regional trade agreements. Now, in order to ensure that world trades freely, which was the concept of free trade economy,
वी नीड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। प्लस सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रेड को इंक्रीज करना होगा, जहां पे इंडिया का स्ट्रांग होल्ड है। इंडिया हैज अ स्ट्रांग होल्ड इन सर्विसेज, एज आई अर्लियर मेंशन्ड ऑल्सो, कि कितना ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है हमारा। इंडिया को यूज करना होगा स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड ग्रुपिंग्स लाइक G20 के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स। एंड इसीलिए अभी जो ब्रिक्स का समिट हुआ है 2025 में, उस समिट में ये बोला गया, और अगर कोई बच्चा सीरियस था तो वो ये चीज़ पढ़ के गया होगा मेंस में, और अगर वो तुरंत अभी रीसेंट मोस्ट चीज़ें कोट करता है मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर आता है। ठीक है, क्या बोला गया था? दैट वी विल यूज द करेंसीज ऑफ कंट्रीज, जो भी ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दे विल डू व्हाट? दे विल एक्सेप्ट ईच अदर्स करेंसी। देयर विल बी नो नीड ऑफ डॉलराइजेशन ऑफ देयर इकोनॉमी। एंड वंस दिस ग्रुपिंग हैज सच अ डिसीजन, तो इसी डिसीजन की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसीजन लेना पड़ा दैट हम लोग ब्रिक्स के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। वाई? बिकॉज अगेन इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोलिंग द ट्रेड। ठीक है, सो देयरफॉर दीज वर द क्वेश्चंस, एंड नाउ एट द लास्ट दिस वाज द क्वेश्चन, एंड एट द लास्ट हाउ टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाउ टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन समराइज दिस दैट इंडिया कैन लेवरेज एक्चुअली a $500 billion manufacturing industry, $500 billion manufacturing of trade by pushing itself and by pushing the reforms which it has recently taken, like the production linked incentive scheme, the employment linked incentive scheme. These schemes can be pushed further, and India can also push for more reforms in the domain of ease of doing business, so that more FDI gets attracted irrespective of whatever sanctions are there at the international level, because altogether the trade and the capitalism is moved by the profit only, not by the tariffs and taxes. Understood? So that is all for this question. And if we contribute, if we increase the domestic demand, because India's domestic demand contributes to 60% of its GDP, and India has already focused a lot on आत्मनिर्भरता, तो वो वाला डोमेन भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं for what? Conclusion. That how India can balance this thing, how India can utilize and how India can mitigate these challenges of protectionism and bilateral trade is by developing its own domestic market, by increasing its domestic demand, which actually is supporting 60% of our GDP. With this, we will move to the next question. So the question is, explain how the fiscal health index can be used. How can this fiscal health index be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India? In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies? क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि जो अभी रिसेंटली फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज हुआ है, ये कैसे यूज हो सकता है टू असेस द फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। मतलब this index is an index which will talk about the fiscal health of states, but आपने ये बोलना है that how will it help to assess। तो इसका जो assessment का process है and the parameters which it uses for assessment, वो हमें discuss करने हैं। Plus in what way would this encourage the states to adopt prudent and sustainable policies? स्टेट्स को कैसे ये एनकरेज करेगा सो दैट स्टेट्स विल नाउ अडॉप्ट व्हाट? बेटर फिस्कल पॉलिसीज। तो स्टेट्स कैसे करेंगे और ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है, ये इंडेक्स क्यों आया है और इस इंडेक्स को यूपीएससी क्यों पूछ रहा है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? दैट दिस इंडेक्स वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। अब अगर नीति आयोग इस इंडेक्स को लॉन्च कर रहा है
तो इस इनिशिएटिव को लेके नीति आयोग ने क्या क्या चीजें कंसिडर करी है? बहुत सिंपल सी चीज, दिस इंडेक्स टॉक्स अबाउट द एक्सपेंडिचर क्वालिटी, the expenditure quality which is done by states. It will also talk about revenue mobilization. It will also talk about there are 4 parameters of this index, and the third one is prudence, fiscal prudence, prudence of expenditure, and this also talks about prudent and sustainable fiscal policies. That is the main parameter of this index. ठीक है, it also talks about fiscal prudence, and last में it talks about debt sustainability. ठीक है, so this will be our introduction, that it will evaluate that this index evaluates not only the expenditure but also the quality of expenditure, revenue mobilization, and it will also see the debt index and debt sustainability. Now, once you understand the parameters of this index, it is easy for you to answer this question. क्योंकि अगर ये क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रैक कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हु आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हु आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स. Best performing states and worst performing states in all these parameters. अगर आपको ये समझ में आ गया, now you need to understand one more thing, that is कि अगर ये चीज हाईलाइट हो रही है, अगर ये चीज यहां पे रेगुलेट हो रही है, ये चीज यहां पे आइडेंटिफाई हो रही है, that whose expenditure is better in qualitative terms, because अगर किसी स्टेट ने एक्सपेंडिचर किया एजुकेशन के ऊपर, अगर कोई स्टेट एक्सपेंडिचर कर रहा है एजुकेशन के ऊपर और उसका कैपिटल आउटले जो एजुकेशन के लिए है वो 10,000 करोड़ है, एग्जाम्पल, एंड दिस स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल ऑन एजुकेशन पैरामीटर्स, देयर इज नो एक्चुअली आउटकम आउट ऑफ दैट एजुकेशन एंड इट्स लिटरेसी रेट इज स्टिल 70% ओनली, देन देयर इज समथिंग स्पेसिफिकली रॉन्ग विद दैट स्टेट्स एजुकेशन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूं, तमिलनाडु एंड केरला, दे हैव लोअर कैपिटल आउटले फॉर डिस्पाइट हैविंग अ लार्जर हेल्थ कमिटमेंट्स एंड एजुकेशन कमिटमेंट्स, स्टिल दे आर हैविंग स्मॉलर कैपिटल आउटले, कि कम कैपिटल उनने रखा है इसके लिए, डिस्पाइट देयर लार्जर व्हाट कमिटमेंट्स दैट वी विल डू दिस एंड दैट इन एजुकेशन. Further, there is a fiscal health index. As per this fiscal health index, there is an imbalance in these states about their capital outlay and what are their commitments for education and population control and consumption. Because this capital outlay and total expenditure, the quality of expenditure is determined in 2 things. One is that how much capital outlay is there, that कितना ये लोग कैपिटल के लिए रख रहे हैं और कितना इन्होंने रखा है किसके लिए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए. ठीक है, अंडरस्टूड. दैट इज अबाउट केरला एंड तमिलनाडु. फर्दर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात करें, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात करें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर द स्टेट्स एक्चुअली यूजिंग देयर ओन टैक्स रेवेन्यू और दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग व्हाट, क्या इनके पास अपना टैक्स रेवेन्यू है, क्या ये बोरो कर रहे हैं, और आर दे डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल, आर दे डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल ग्रांट्स. अगर ऐसा है तो क्या उनको मेजर्स नहीं लेने चाहिए टैक्स बयानसी को लेके? क्या उनको मेजर्स नहीं लेने चाहिए डिपेंडेंस ऑन ट्रांसफर्स को कम करने के लिए? So that is what this indicator highlights about. This talks about fiscal prudence, जो हमने यहां पे लिखा है fiscal prudence. This talks about fiscal prudence, and fiscal prudence, if you compare, for example, Haryana is relatively high revenue deficit. Haryana usually is utilizing its, I can say, revenue into
what? Revenue expenditure. Its capital expenditure is lesser than its revenue expenditure, which is a problem in that state, and that is what has to be changed. And that is why this indicator, this index, would encourage the states to take prudent fiscal measures, because it incentivizes and it ranks the states, and this provides a ground for competitive federalism. And that is how we will conclude this question. The question's another demand is that this will encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies. And how will this happen? This will happen only with benchmarking their peer learning, benchmarking and peer learning. How to benchmark? How to set a benchmark? ठीक है? How will this index, fiscal health index, benefit or help states in fiscal prudence? कैसे हेल्प करेगा फिस्कल प्रूडेंस अचीव करने में? बहुत सिंपल सा, पहला, दिस विल सेट अ बेंचमार्क that if this state is performing one and it's at number 1 level, for example, Odisha is at the top of of the whole index. Odisha has rank 1 in terms of fiscal prudence, and the overall index score of Odisha is 67.8. Therefore, you need a very strong debt index for that. Odisha का strong debt index is represented by, because Odisha has a score of 99 in terms of debt index. Debt sustainability को लेके Odisha का score is 64. So therefore it actually tops the whole index, Odisha. अब अगर ऐसा हो रहा है तो this will set up what? इसकी वजह से क्या होगा? Odisha will be now a benchmark for all. And everyone will try to follow and they will learn through peer learning with each other. Understood? यहाँ तक समझ में आ गया? That is how this will help. Therefore, this will also help in diagnosing specific gaps in the sector. अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर खराब है, अगर कहीं पे जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो गलत तरीके से हो रहा है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, स्टेट का अपना टैक्स का बेस लोअर है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड उन स्पेसिफिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करेगा. एंड दैट इज वाई इट विल हेल्प स्टेट्स टू हैव फिस्कल प्रूडेंस. दिस विल ऑल्सो हेल्प स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर कैपेक्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट्स का इंक्रीज हो सकता है इस इंडिकेटर की वजह से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लो, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इनका अराउंड 27% ऑफ एक्सपेंडिचर गोज टू डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, विच इज एक्चुअली टू कैपिटल, इट इज एन कैपिटल आउटले. बट वहीं पे अगर आप आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब देखो तो इट्स अराउंड 10%. Therefore, they can now use this as to prioritize their budget. This fiscal health index can also be used to give early warnings to the states. Those states which are under debt stress, जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है. Understood? So that is all what we are going to write in this question, that is fiscal health index, and we can continue and we can conclude this with a summary that we need monitoring, we need prudent fiscal management for all of our states and all of the integrity of India, whether that is in terms of financial integrity. Done? With this, we'll move to next question, and the next question is production linked incentive scheme. And the question says, what is the rationale behind this scheme? What are its achievements? And in what way can the functioning and outcome of this scheme be improved? ठीक है, तो क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे? 3 चीजें. What is the rationale of this scheme? ये स्कीम क्यों लाई गई है, प्लस इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है अभी तक, और इसके साथ साथ इसकी फंक्शनिंग और इसका आउटकम इंप्रूव कैसे किया जा सकता है. I very well recall there was a clearly mentioned editorial, और बहुत ही explained editorial था वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आया था, द हिंदू के और एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. कम से कम मैंने 3 से 4 एडिटोरियल्स पढ़े हैं इस एक टॉपिक के ऊपर. ठीक है,
मिनिमम मैंने 4 से 5 एडिटोरियल्स पढ़े हैं इस एक टॉपिक के ऊपर, वो भी एक सिंगल न्यूज़पेपर से। अगर मैं 5-6 न्यूज़पेपर की बात करूं जो कि यूजुअली हम पढ़ते हैं सब लोग, तो अगर आप 3-4 न्यूज़पेपर्स देखो तो देयर वर मोर देन 10 और 12 एडिटोरियल्स। ठीक है, अगर आप मिंट की बात करो, इंडियन एक्सप्रेस की बात करो या इकोनॉमिक टाइम्स की बात करो, तो कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाएगा। ठीक है, द हिंदू में तो आता ही आता है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में तो आता ही आता है, बट बाकी सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया था। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। Now, what is the rationale behind this production linked incentive scheme which was introduced in 2020? अब ये स्कीम जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो ये ऐसा बोल के इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में कि हमें क्या करना है, हमें आत्मनिर्भरता को A&B को प्रमोट करना है, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है, और उसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है, डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है। डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर कोई भी इंसान प्रोडक्शन करता है तो हर एक प्रोडक्शन के यूनिट को जितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसको उतना ही ज्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल सा रैशनल है कि हमें डोमेस्टिक सेक्टर को बूस्ट करना है, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके लिए हम स्कीम लेके आ रहे हैं और यही चीजें हमें इसके इंट्रोडक्शन में लिखनी है। We will simply write that 1.97 lakh crore rupees were kept as an outlay for this scheme, and this scheme targets 14 major sectors, 14 strategic sectors, whether that is electronics, pharma, automobiles, textiles, steel, drones वगैरह। अब इन सेक्टर्स पे काम करने के लिए there were the particular aim to work on these sectors was very simple, that is to boost domestic मैन्युफैक्चरिंग। अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता था, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी वाज ओवरली सर्विस ड्रिवन। ओवरली सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब यह है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% ऑफ जीडीपी, व्हाइल एज हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 16 to 17% in our GDP। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। सो देयरफॉर इफ वी हैव वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, वी नीड टू बैलेंस द टू, and that is why that we have to understand that why we are supposed to balance our goods and services, because this is the only way we can maximize, and maximum utilization of resources will lead us to achieve our potential GDP. A figure can be drawn in this question also, that is the production possibility frontier. In order to achieve the potential GDP, we need such schemes, and that is the rationale of this scheme. Further, we need to reduce our import dependence. We need to attract global investments, and global investment particularly हमें एक alternative provide करना था to China, that MNCs can now come and invest in India. Because post 2020, the world was changing, the economics of the world was changing. MNCs were now finding new markets to invest in. That is why we created this scheme, that is why this scheme was brought in. And what are its achievements? PLI aims to raise manufacturing by 25% and increase the share of manufacturing into GDP by 25%. Plus, स्पेशली हमें APIs पे काम करना है सबसे ज़्यादा। वी नीड टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, जॉब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके सेमी स्किल्ड एंड आई कैन से स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना है, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना है। ठीक है, लास्ट में व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, दिस वाज द रैशनल एंड व्हाट आर द अचीवमेंट्स। Achievements of this scheme, I will simply say that by March 2025, we realized around that the investments in this scheme reached 1.76 lakh crore. That is how this scheme performed by March 2025. That is how this scheme performed well. प्रोडक्शन एंड सेल्स की बात करें तो क्यूमुलेटिव सेल्स विच वेर अंडर दिस PLI वेर अराउंड 16.5 लाख करोड़। Cumulative sales around 16.5 lakh crores.
So once you give these facts, you also need to mention that India has emerged as second largest mobile phone manufacturer. India has now taken the place of mobile manufacturing also. Employment generation by this scheme was around 12 lakh jobs were created, direct and indirect, in tier 2 cities and rural areas and tier 3 cities also. Further, it helped us to boost our FDI because it provided an alternative, that is the China plus one alternative is similar. और उसके साथ साथ हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए. देयर वेर सम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, सेमीकंडक्टर पार्क्स विच वर डेवलप्ड इन गुजरात, एंड मैन मेड फाइबर की बात की जा रही है सूरत में बनाने की. ठीक है, तो ये जो क्लस्टर्स थे ये पीएलआई की अंडर मतलब बनाए गए. बट यस, देयर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस पीएलआई स्कीम ऑल्सो, एंड दीज इश्यूज, व्हाई वी नीड टू हाईलाइट इश्यूज, जबकि इश्यूज यहाँ पे पूछे नहीं गए हैं. देखो, अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, what are its achievements, in what way can we improvise the functioning and outcomes of the scheme, that is what has been highlighted. So is it anywhere asking about issues of the scheme? नहीं, issues नहीं पूछे गए हैं, but we should write issues. क्यों? क्योंकि issues होंगे तभी इसकी functioning improve हो पाएगी, तभी इसका outcome improve होगा. We need to find out that what are the problems with the scheme, what are the problems which are associated with the structure of the scheme, then only we can say that where to improve. जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक सोल्यूशन भी नहीं देंगे. सो वी नीड कि हम यहां पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके इनको बताएं. और प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर द इश्यूज इन दिस स्कीम? पहला, देयर इज अनइवन sectoral variations are there. That is, for example, electronic sector has thrived, but electronic sector versus textile sector versus the other sectors like the solar modules, like the white goods, they have not performed well. There are implementation delays also. Implementation delays in the mechanisms, in the projects, and there are bureaucratic hurdles. Which are there. Plus, the small and MSME participation has been very less because large corporates have dominated the scheme. Further, there has been less focus on assembly, and there has been more focus on assembly level production and more focus and less focus on value addition. ठीक है? So therefore there needs to be changes, whether that is in terms of insufficient research and development. There are no large investments in terms of research and development, and innovation linkage is not there in the PLI. Rather we are just saying that आप बस production increase करो, innovation increase करने में नहीं आ रहे हैं. We need to incentivize for more innovation, for more innovative products. Then only we can say that PLI is working at its best. ठीक है? Because the world needs to address the new age challenges, not the कि फैक्ट्री लाइन पे चल रहा है काम, बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, रिमोट बन रहे हैं, टीवी बन रहा था आज से 50 साल पहले, तो वो बने ही जा रहा है. ठीक है? तो वैसे काम नहीं करना है, बस प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करनी है, नए तरीके के नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स बनाने हैं. सो इनोवेशन हैज टू बी इंसेंटिवाइज्ड. दीज आर द इश्यूज विद द स्कीम, एंड दीज इश्यूज इफ सॉल्व्ड कैन हेल्प अस in improvising the functioning and achievements of the scheme. Therefore, at the last, we must give a way forward in the scheme. So, how can we improve? Ways to improve. How to improve the scheme? Pehla, there should be balanced uptake in sectors. Balanced uptake in sectors means that every sector should be addressed in a tailored approach. There should be improvisation in logistics, and there should be improved logistics, improved skills and incentives. Further,
the focus on MSMEs should be there, that the incentives for wider participation of MNCs, there should be wider participation of MSMEs also. Further, monitoring and transparency को increase करना है, and GST का structure plus rates, these need rationalization. ठीक है. So once you rationalize your structure, once you rationalize your goods and service tax, once you rationalize your taxation system, then only you can ensure that your economy is working better. Understood? यहाँ तक समझ में आ गया. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है. एंड लास्ट में वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन बाय सीइंग दैट वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी which the PLI has provided us a way forward, but yes, there needs more to be done in terms of innovation. The next phase of PLI should be about success, innovation, MSME integration and export competitiveness. That is how we will conclude this question. ठीक है. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the question says that India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by semiconductor industry in India? Mention the salient features of India semiconductor mission. अभी आप देखना, इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स है और उन पार्ट्स को हमें समझना है. The first part is that India aims to become a semiconductor manufacturing hub. This is an affirmation. ठीक है, ये स्टेटमेंट खुद ही बोल रहा है दैट इंडिया क्या चाहता है. अगर ये अफर्मेशन आ गई है, सो देन व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. अब आप समझो इस चीज को. पहले अगर ये अफर्मेशन हमारे सामने आई है तो हमें इस अफर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट देना है या हमें ये बताना है व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, व्हाई इंडिया इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस, व्हाई इज इंडिया एक्चुअली एमिंग फॉर दिस. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इसको एड्रेस करना है इंट्रोडक्शन में. उसके बाद देन देयर विल बी 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. वन विल बी द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड अनदर विल बी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस मिशन. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन, ये 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देन लास्ट में कंक्लूजन. अंडरस्टूड? क्लियर? मेंशन. नाउ अंडरस्टैंड. अब सेमीकंडक्टर्स को इनिशिएट करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स. These semiconductors are such, I can say, elements in modern electronics which actually lay the foundation of modern electronics. How? Because they provide us a particular thing, that is controlled conductivity. कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? दैट अ कंडक्टर और अ नॉन कंडक्टर, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाए और एक ऐसा डिवाइस जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं जहां पे बिल्कुल पास ना हो, उसके बीच का है हमारा सेमीकंडक्टर. दैट इज एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, at a specific temperature, at a specific rate of temperature, this conductor allows the movement of electrons. This conductor allows the conductivity, and that is what makes them special. That is why they are being used in smartphones, artificial intelligence, renewable energy, and India imports around 90% of its chips. 90% import dependence. And this is the reason, the two things are the reason that India has such aims. अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे? We will start with the body. और बॉडी में क्या लिखेंगे? That despite of this 90% import dependence, हमें क्या करना है? That India's vision is that Indian economy, $1 trillion of Indian economy should be digitally driven. ठीक है, India has a goal of $1 trillion of digital economy. ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक. प्लस इंडिया also wants digital sovereignty. India also wants to strengthen its digital sector, strengthen its digital sovereignty by reducing the import dependence.
प्लस नाउ अगर हमने ये चीज हाईलाइट कर ली इंट्रोडक्शन में, तो इसके बाद हमारे पास बचता है बॉडी के दो पार्ट्स। उसमें हमें क्या लिखना है? सबसे पहला पार्ट है चैलेंजेस टू व्हाट? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। What are the challenges to semiconductor industry? सबसे पहला चैलेंजेस हाई कॉस्ट और हाई कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आर देयर, देयरफॉर इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डेवलप करने के लिए वी नीड अ कॉस्ट ऑफ अराउंड $10 बिलियन। ठीक है, $10 बिलियन का हमें एटलीस्ट क्या चाहिए? 10 to 20 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग चाहिए, कैपिटल चाहिए, देन ओनली दिस प्लांट कैन बी बिल्ट। प्लस ईच फैब माइक्रो दिस सेमीकंडक्टर का फैब, ईच फैब कॉस्ट अराउंड $5 बिलियन to $10 बिलियन। India has set up a strategic package of 76,000 crores. And this package was allotted to what? And this is very much modest in nature. Further, इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा? The second challenge is the scientific and technological gap which is there. So what is the scientific and technological gap? I will just explain it to you. बहुत सिंपल सी बात है। That we are still focusing on the old models. We are still focusing on the old models. What kind of old models are there? Simple. अगर आप देखें तो we are still focusing on the 28 and 65 chips and 25 and 65 nanometer chips. ठीक है, अगर इन्हीं चिप्स पे हमें रहना है तो हम आगे कैसे जाएंगे? Because our capabilities have not yet developed. There is a dependence on the foreign firms in terms of lithography. There is dependence on foreign firms in terms of wafer technology and the particularly photoresists. Especially there are some gases which are used, the specialty gases जिनको बोलते हैं for semiconductor industry. We are highly dependent on the imports of those. इसीलिए there is a problem that we need to invest more in scientific development of this semi-fab industry. That is one challenge associated to this industry. Second, one more challenge is that infrastructural gaps. Third challenge, infrastructural gaps. बहुत सिंपल सी बात, every fabrication unit needs 24/7 electricity. It also needs more than around 10 million liters of water, ultra pure water every day. ठीक है, and waste handling, hazardous waste, clean room standards, and plus सबसे ज्यादा important logistics which are still inadequate in India. These are the challenges. Supply chain management, raw material नहीं मिल रहा है टाइम पे, डोमेस्टिक वेंडर बेस नहीं है हमारे पास, दैट डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, डोमेस्टिकली हमें जो इसके यूनिट के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फॉर एग्जांपल स्मॉलर टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अ मार्केट और एन इंडस्ट्री हैज़ दी बैकवर्ड लिंकेज ऑल्सो एंड फॉरवर्ड लिंकेज ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है, और दोनों चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तभी जाके कोई इंडस्ट्री डेवलप हो पाती है। फर्दर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस हैज़ टू बी एंश्योर्ड। स्टेट एंड सेंटर का कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स आर देयर लाइक चाइना एंड यूएस के टेंशंस, बिकॉज चाइना डोमिनेटेड द सेक्टर, एंड यही मैंने इससे पहले भी बोला था दैट चाइना का डोमिनेंस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर है, और अभी रिसेंटली मैंने बोला था that China abhi recently did what? It stopped the exports of particular elements like rare earth magnets,
जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज हैम्पर्ड. Further, China stopped its laborers from working in India's the Apple iPhone manufacturing units. तो ऐसी चीजें आती है. China has a monopoly in rare earth elements which are highly utilized for semiconductor industry like germanium, titanium, critical minerals, जहां मोनोपोली है प्रोडक्शन की चाइना की. इसीलिए इंडिया इज ऑल्सो नाउ सोर्सिंग दीज क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम फ्रॉम आउटसाइड, whether that is Argentina, which was asked in UPSC Prelims also. ठीक है, understood यहाँ तक. So therefore there are challenges also and there is way forward also, that how we can do this, how we should do this, the salient features of now how we should do this. We should prioritize investment, we should attract foreign investment and private sector investment into this unit, into this semiconductor industry, and then only we can ensure that we have enough. हाँ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके हमें क्या करना होगा. वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी नीड टू इन्वेस्ट मोर. दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हाट, हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. अगर हमने ये मिशन लॉन्च किया है तो इसीलिए इसके सेलिएंट फीचर्स पूछे गए हैं. सो देयरफॉर वी विल राइट व्हाट सेलिएंट फीचर्स. सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. कौन कौन सा फीचर है हमारे पास? बहुत सिंपल. 76,000 करोड़ रुपीस का हमने आउटले रखा है एंड दिस मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2021 एंड दिस मिशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी. 2021 में हमने ये मिशन लॉन्च किया. द फोकस एरिया इज टू डेवलप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स. ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स प्लस फैब्रिकेशन प्लांट्स एंड डिस्प्ले फैब्स. ठीक है, ये दो चीजें हमें बनानी है. पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, प्लांट्स एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट्स. प्लस वी विल ऑल्सो सेट अप द ATMP. व्हाट इज ATMP? बहुत ही सिंपल, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग. Packaging of these semiconductors. Also, we will also see that outsourced semiconductor assembly test units will be established. The chip design startups will be promoted. Research and particularly there will be focus on indigenous intellectual property. One more thing, that we will also develop skilled talent pool so that we have people working from India in this sector. And these are some specific features of this mission. And we will also see that iske saath saath we are giving around 50% incentives for manufacturing and compound semiconductors. For manufacturing of compound semiconductors, silicon products, silicon photonics and other products are incentivized. With this, we need to understand that India has very well worked in semiconductor industry and for semiconductor plants, and we have achieved the goals, and we have not yet achieved the goals, but yes, the salient features of this India semiconductor mission have been discussed. Now, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया है सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, ये भी समझ में आ गया है दैट सेमीकंडक्टर मिशन काम कैसे करता है, इसके फीचर्स क्या क्या है. नाउ वी विल कंक्लूड दिस क्वेश्चन. और कंक्लूजन कैसे होगा? कंक्लूजन बहुत सिंपल होगा, दैट वी विल समराइज इट एंड वी विल ऑल्सो हाईलाइट द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री इन दिस डोमेन. ठीक है, एंड वंस वी हाईलाइट द नीड ऑफ दिस इंडस्ट्री, that it is everyday need and we have this the need of semiconductors in everyday accessibility, whether that is mobile phones, whether that is tablets, whether that is display units, whether anything, the chip. It was said once that world has witnessed 3 revolutions. One was the revolution which was set by fire, another was by the wheel, and the third revolution was by developing the integrated chips, the semiconductor chips.
And with this, we can conclude this question, and with this, we will conclude this discussion also. I wish you all the best. Thank you for joining me here. Jai Hind.